Hello engineering aspirants, welcome back to our next lectures. Last lectures we were discussed about metallic chemistry. When two dissimilar metals join together, so there is some voltage gradient formed in between these two plates. Clear? The metals having greater positive charge is act as a positive plate, the metal having lesser positive charge act as a negative plate, and in between these two plates it looks like a capacitor. So in between these two plates some voltage gradient is formed, and apart from voltage gradient some seawater is present in between these two plates. So एक phenomenon होगा, that is electrolysis. So in this lectures we are going to discuss about how rusting takes place on your hull. Again, sometime asked a question in your class for oral. How rusting? Clear? One written and one oral. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. This is what it takes a ETO guy to clear his COC exams and start selling and getting that good salary in his hand, right? And the pressure is immense, I understand. So I have got for you this ETO COC excellence package available at Merchant Navy recorded platform. Presently these are recorded classes. Go start watching them. Ship पे ही रह के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, so that you clear this exams in the very first attempt. Apart from that, if you're worried about how will you perform as a first time ETO officer independent on board ship, why don't you invest on ETO officer excellence package? वो सब चीजें जो कि आपको एक कॉन्फिडेंट ETO ऑन शिप बनाएंगी. जय हिंद, जय भारत, जय माता. सी, ये बेसिक्स आपको समझना होगा, तभी आप पूरी आईसीसीपी की कॉन्सेप्ट समझ पाओगे. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये समझना ही नहीं चाहते हैं, बोरिंग लगता है, बट आपको ये समझना होगा. क्लियर? तभी आप पूरी आईसीसीपी की फंक्शन समझ पाओगे. क्लियर? नाउ last lectures we were discussed about when two dissimilar metals joining together. जब दो dissimilar metal joined हो रहे हैं एक साथ, clear, then the metal which is having more positive charge is act as a which plate? Positive plate. This one is positive, and the metal which act as a or metal which is having lesser positive charge which is act as a negative plate. This is your negative plate. Clear? This is your negative plate, right? थोड़ा यहाँ स्पेस दे देता हूं so that मैं पूरी रिएक्शन आपको शो कर पाऊं. क्लियर? नेगेटिव, नेगेटिव. क्लियर? एनी डाउट? So this is your positive plate and this one is negative plate, and in between these two plate what is there? Yes, there is seawater. Clear? Seawater. And this positive plate, in this lecture हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? Pure iron having greater positive charge. Clear? Having more number of positive charge. So this pure iron metallic plate is act as a whole positive plate. Clear? So this is your pure metal, that is Fe. Pure metal. Clear? And this one last lectures हम लोगों ने डिस्कस किया था your iron plus alloy. Alloy here refers to your iron plus stainless steel, iron plus stainless steel plus aluminum alloy, like that. Clear? So this iron plus other metal means this metal is different from this pure iron, having lesser positive charge as compared to this pure iron. So this lesser positive charge wala plate is act as a negative plate, Clear? This act as a negative plate. So this is your Fe plus X. Clear? So this iron को मैं बोलूंगा पॉजिटिव एंड इसे मैं बोलूंगा नेगेटिव, एंड दिस इज योर सी वाटर इन बिटवीन दीज टू प्लेट, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग, सी वाटर, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर? यस, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. एंड सी, अब ये प्लेट्स है, दिस प्लेट is positive plate, this one is your negative plate. So in between these two plates there is salt water. Apart from salt water, this plate looks like a
capacitor. So there is some voltage gradient in between these two. There is some voltage gradient in between these two, means some supply voltage. So if you supply some voltage in between these two, तो in between these two plate क्या है? सी वाटर है. What is the molecular formula of sea water? H2O. So as जैसे ही आप कुछ वोल्टेज सप्लाई करोगे, क्लियर, कुछ जब वोल्टेज अप्लाई होगा इस सी वाटर में, then your H2O is dissociates into two different ions. Means we can say the water gets ionized in your chemistry language. This H2O get ionized into H plus and OH minus ion. Clear? H2O get ionized into H plus OH minus ions. Clear? So this is 2, 2, 2. Clear? 2 H2O ionized into 2H plus 2OH minus ions. Clear? So अब यहां पर मैं बोल सकता हूं H plus OH minus ions. Now one more thing is, सी वाटर में भी क्या होता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज देयर. सम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन योर सी वाटर एज वेल. सो यहां पर क्या होगा? एक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होगा, दैट इज O2. क्लियर? दिस इज योर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. नाउ जब आप बच्चे थे क्लास 10th में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइक चार्जेस, दिस इज योर क्लास 10th कॉन्सेप्ट है. लाइक चार्जेस repels each other and unlike charges attract each other. Means negative repels each other and positive repels each other, but your positive attracts each other or negative attracts each other. Like charges repels each other and like charges attract each other. Same concept हम यहां पर पढ़ने वाले हैं. Now tell me, this is plate A. प्लेट A क्या है? पॉजिटिव चार्ज. मीन्स दिस आयरन क्या है? पॉजिटिव है. नाउ दिस प्लेट इज नेगेटिव, मीन्स आयरन प्लस दिस मेटल इज क्या है? नेगेटिव है. नाउ H प्लस एंड OH प्लस आयन, तो OH माइनस नॉट प्लस, OH माइनस ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है. नाउ टेल मी, अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के साथ अट्रैक्ट होगा या नेगेटिव प्लेट के साथ अट्रैक्ट होगा? अप्लाई सेम कॉन्सेप्ट. योर दिस is negative charge attract towards positive charge. Now means what? Fe plus OH minus, Fe plus OH minus, यहां पर क्या फॉर्म होगा? FeOH whole 2. क्लियर? FeOH whole 2. So Fe plus OH minus, Fe किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH माइनस के साथ. ये पॉजिटिव मेटल प्लेट है, पॉजिटिव मेटल प्लेट रिएक्ट कर रहा है, नॉट नेगेटिव मेटल प्लेट. हाउ कैन नेगेटिव एंड नेगेटिव कैन रिएक्ट? ऑफ कोर्स नो, योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्ट होगा. सो FeOH मींस OH जो है Fe की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है. एंड OH जो है दिस वन इज योर नेगेटिव आयन. सो नेगेटिव आयन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट. क्लियर? So Fe plus OH minus is equal is Fe reacts with your OH minus, फॉर्म क्या होगा? FeOH whole 2. क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें आपको? अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो. क्लियर? 2 FeOH whole 2. क्लियर? 4, तो दिस वन इज 4, राइट? ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Fe plus 4OH minus, that is 2Fe to form 2FeOH whole 2, right? Any doubt? Clear? Or we can say Fe plus 2OH minus to form FeOH whole 2, right? Any doubt? Balanced chemical equation. Now see further. Now your FeOH whole 2 reacts with whom? Reacts with your dissolved oxygen as well. Dissolved oxygen is present in your sea water. Clear? So your FeOH whole 2
reacts with your dissolved oxygen, that is O2, to form FeOH whole 3. To form FeOH whole 3, and this is nothing but is your rust. यही क्या है? रस्ट होता है. अब ये क्या हो रहा है? ये सारा कहां जा रहा है? ये पॉजिटिव प्लेट्स में जा रहा है, एंड पॉजिटिव प्लेट्स में रस्ट जो होगा एक्यूमुलेट होता जाएगा एंड ये रस्ट हो जाएगा. क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? तो मीन्स FeOH whole 2 reacts with your dissolved oxygen, then it will form FeOH whole 3. अब यहां पर क्या हो गया? रस्ट फॉर्मेशन हो गया. सो दिस इज हाउ रस्टिंग टेक्स प्लेस ऑन योर शिप्स हल. मीन्स रस्टिंग कहां हो रहा है? रस्टिंग यहां हो रहा है. रस्टिंग यहां हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट्स में रस्टिंग हो रहा है. सो हाउ टू प्रिवेंट दिस रस्ट? ICCP मेथड्स. तो इसलिए आपको ICCP से पहले व्हाट इज डिसिमिलर मेटल्स, मेटालिक प्रॉपर्टी, ये सारे थिंग्स समझना हो. क्विक 2 मिनट्स की रिवीजन करता हूं. योर शिप इज बीइंग फॉर्म्ड बाय different joining metals together. Suppose I am taking 2 different metals, one is pure iron metal and other is iron plus alloy. So pure iron metals having greater positive charge, so this metallic plate is act as a single positive plate, and your metal means iron plus other alloy metal is having lesser positive charge. So this metal number 2, iron plus alloy metal, is act as a negative plate. So this looks like a capacitor. So in between positive and negative plate there is some voltage gradient is formed, and apart from voltage gradient there is some sea water. Clear? Sea water hai. Now if we supply voltage across these two plate, that sea water, what is the molecular formula of water? Molecular formula of water is H2O. Then H2O dissociates into two different ions, that is H plus ion and 2H minus ion. Clear? H plus and OH minus ion. So this one is H plus and OH minus ions. So basic things, your negative charge attracts towards positive charge. So this is OH minus ion, this is complete negative charge, attracts towards simple iron plate, positive plate है ना, iron plus metallic plate तो negative plate है, तो it will attract towards iron positive plate. Clear? Positive plate, then it will react and form FeOH whole 2. Now FeOH whole 2 further reacts with, yes, this FeOH whole 2 further reacts with your dissolved oxygen which is present in your sea water, and it will form FeOH whole 3, and this is only called rust, and this is the formula of rust. तो यहां पर slowly rust create होगा, and after some years or not even much years, after 1 or 2 years your half of the ship will get rusted. Clear? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ICCP, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन. एंड नाउ समटाइम्स स्टूडेंट आस्क्ड मी, सर ये H प्लस भी तो रिएक्ट करेगा इसके साथ, नेगेटिव वाले के साथ. नो, सी लुक, सी दिस H प्लस इज अ गैस. क्लियर? दिस H plus is directly react with atmosphere. मीन्स इसकी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाली है. इफेक्ट होगी OH माइनस आयन की. मीन्स OH माइनस आयन्स की अगर प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोरोजन होगा शिप्स हल में. क्लियर? सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड हम लोग ICCP पे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर लेक्चर्स. थैंक यू.